Oh, dear students, now in today's class we will discuss about cell cycle and cell division. This is another chapter. In this chapter we are going to discuss about the cell division, how the cell divides into multiple cells, and these processes are actually going on and on. One cell will divide into number of cell, then generally आमे सेल डिविजन माने बुझुचे माइटोसिस को माने one cell will divide into two cell, then another cell, one cell will divide into again two cell. Immediately one cell, two cell, two cell, four cell, four cell, eight cell, 16 cell, like this. The cell division is actually going on and on. Okay. But basically आमे cell division माने माइटोसिस बोली भावुचे, किंतु मियोसिस मध्य गोटे टाइप रो cell division. ता आमे पढ़िबा, we will discuss all these things in details in this chapter. So, but one thing we have to understand, cell division होची माने cell रा multiplication होची, माने गोटे cell आउ किछिटा नुआ cell को तैयारी करूची. So when one cell will produce new cells, that parent cell will exist? No. Parent cell does not exist. माने जे original cell थिला, that is not actually existing after producing new cells. So what is then cell cycle? Cell is actually dividing not continuously, not immediately after a cell division. माने गोटे cell division हो आउटे cell division होनी. माने one cell division occurs, then immediately another cell division occur, then immediately another cell division occur. It is not like that. एमिति होनी. There is an interval, there is a gap between two sequential cell division. माने गोटे cell division हला, one cell produces two cell, then another, these two cell will produce four cell undergoing cell division. So when one cell produce two cell, this two cell undergoes a growth, tar maturation haba, undergoes growth, gote growth phase deki gati karibo. After attaining complete growth of those cells, mane complete maturation hegala pore cell ro, then second cell division occurs. एमिति जो ग्रोथ फेज टा हला गैप फेज बुझा पड़ला. जेमिति कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन गोटे एग्जांपल दोची बुझिया पई, गोटे मनीष आ गोटे मनीष को जन्म देला. जो मनीषटा जन्म हला इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कौन सी आ गोटे मनीष को जन्म दउची कि नहीं. So one human, for example, two human, okay, two human, father, mother, two human give rise to or giving birth to a child. That child undergoes maturation, से mature होची. 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष mature हला परे, then that child will be able to produce another child. So this is the gap phase. So cell division occurs one by one, that is called a cell cycle. Gote sequentially gote cell produce kala dita cell produce kala charta cell. तो ये गोटे sequence होची, माने cell division हला, तापर cell division पे preparation हला, माने gap phase. Another cell division पे आउतरे preparation हवा, another cell division पे preparation होची, सर होची preparative stage और gap phase बोली कोचंदी पढ़ियो आमे. तो सिमी जो sequentially one cell division, then some gap phase, then another cell division, then some gap phase, then another so this way the cycle is actually going on and on and on
that is called as cell cycle. Okay, so sequence of events mane ghatana, the processes, the mechanism, sequences of events occurs in cell bhitere jo sequence of events hochi kon hochi, what is that, including cell division. If cell division occurs, then there are some mechanisms are going on within the cell, yes or no. So the cell division hochi a preparation of cell division. Which cell division? Another cell division. Gote cell division hala, one cell produce two cell, then those two cell will undergo again another cell division to produce four cell. So one cell produce two cell, then that two cell undergoes preparation for their cell division to achieve the maturity, and after achieving maturity, then those two cell will again undergo cell division to produce four cell, yes or no. So image jo sequential events are actually called as a cell cycle. Then come to cell division. Actually cell division term is completely or mostly used for eukaryotic higher organism. Okay, but आमे जदि प्रोकार्योटिक केस रे कहिबा बोले सेटे सेल डिवीजन बोली न कहि कि ताको आमे डिफरेंट टाइप रो माने मेकानिज्म रे आसुची जोडा कि आमे पढिबा आगो को, that is called as binary fission, multiple fission, budding. All these processes are actually by these processes, this binary fission and all these things in prokaryote, these are actually producing multiple cells. But gote organism tara gote cell thai prokaryote ame dekhile, when that prokaryote undergoes binary fission, it produce two cell, means two organisms again. So generally it is cell division type ro mechanism hochi binary fission re, okay, but it is not exactly cell division, okay, because prokaryotes are unicellular. When that particular organism, particular prokaryote undergoes binary fission, okay, what is binary fission? Fission means breakdown, binary means two. When one cell will be undergoing breaking down to produce two cell, those two cells are actually the two new organisms. तो सेटा होची बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन को आमे कहि परिबा गोटे टाइप रो सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 100%. We cannot say this binary fission as 100% as a cell division. माने cell division बोली आमे ताको 100% कहि परिबा नाही. Okay, but cell division word is actually more suitable to eukaryotes, means one eukaryotic multicellular. माने cell division रे growth भी होची और reproduction रे मध्य helpful होची, सेटा हमें पढ़ेगा. Generally eukaryotic cell divisions are actually two types, mitosis and meiosis. We will discuss, but you might have studied in your schooling that mitosis is nothing but called as equational division. ओडिया रे कौन कहउछंदी समविभाजन. And meiosis is actually called as reductional division. Reduction means अर्ध विभाजन. Reduction means कमिबा माने अधा को कमी जाउछ, अधाडा कमुची ना नै. So it is called as reductional division or अर्ध विभाजन. हेले एठे इक्वेशनल रिडक्शनल. इक्वेशनल माने समान होची, रिडक्शनल मीन्स कमुची, रिड्यूस होची माने हाफ होची. ओके, तो कौन एक्चुअली हाफ होची आमे पढ़िले. वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास दैट इन द सेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और ऑर्गेनेल इज एक्चुअली न्यूक्लियस. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल और control system of the cell. Why? Because the nucleus contains the genetic material, and those genetic material are grouped together to form a complex called chromosome. आमे पढ़िले विषय न्यूक्लियस विषय पढ़िले, क्रोमोसोम विषय पढ़िले. So because the chromosome is the most important complex particle of a cell,
Because it contains the genetic material. Why genetic material is important? Because the genetic material or gene or DNA which is there within the chromosome are actually responsible, the gene or DNA are responsible for the characteristics feature of an organism. माने गोटे organism रो characteristic features को जी कंटेन करुच्ची characteristic feature माने लक्षण गुड़ाक आम मनीषा आमर किसी पर्टिकुलर लक्षण अच्छी बोली तो those characteristic features are found within the gene or DNA, that is chromosome. Okay, so because of that thing chromosome is most important. हेले एठी जेतला आमे इक्वेशन और रिडक्शन बोली कहूचे माइटोसिस मीन्स इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन तो सेल भितर सब इंपोर्टेंट है क्रोमोसोम आ क्रोमोसोम एठी इक्वेशनल होची माने द सेल द ओरिजिनल सेल और पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड जनरली इन हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ यूकैरियोट्स तो डिप्लॉयड and those normal cells, the normal body cells are actually diploid. Those cells when they produce two cells after mitosis, those two cells are also diploid. माने क्रोमोसोम डिप्लॉयड थिला एठी भी डिप्लॉयड हला आमे डिप्लॉयड कोन हाप्लॉयड कोन एडा सब आमे डिस्कशन करिचे मध्य when I was teaching kingdom plantae there I have discussed diploid means set of chromosome, haploid means diploid means a pair of chromosome and haploid means it is unpaired set of chromosomes. So diploid means a pair of chromosome, haploid means unpaired chromosome. माने chromosome जते बेले pair हे कि थिबो like this. Chromosomes are under pairing, these are called as diploid. When they are unpaired, these are called as haploid. So एटा में पढ़ीचे मध्य आगुरु डिस्कशन करिचे. So एटे कौन होची फॉर एटे डिप्लॉयड रो हाप्लॉयड रो मध्य इक्वेशनल डिवीजन हबो जेतला हमें गेमेटोफाइटिक फेज विषय पढ़िथिले किंगडम प्लांटी रे गेमेटोफाइटिक फेज रे हाप्लॉयड सेल्स रहे जेतला से हाप्लॉयड सेल गुडा का मल्टीप्लाई हबो बाय व्हिच type of cell division by mitosis. The haploid ro madhya mitosis haba only in the case of gametophytic phase of a plant. Okay, lower plants. आउ बाकी जेतिकी सब organisms अच्छंती higher living organisms whether it is plant or animal all are having diploid in their body mostly and their mitosis are actually this diploid undergoes mitosis to produce two diploid cell. हेले diploid टा diploid हला एठी आउ reduce हलानी जहा थिला ताहा हला सेथमे आपको इक्वेशनल डिवीजन बोली कहले समविभाजन कहले. But look into meiosis. Meiosis is actually the reductional division. Here the diploid cell produce four haploid cell. दीटा फेज रे हेची आमे पढिबा परे we will discuss in details meiosis 1 कोन meiosis 2 कोन. But look into the overall concept of this thing. In meiosis, one diploid cell produce four haploid cell. Forget the number. Look here, diploid is producing haploid, but here diploid is producing diploid. So diploid टा अधा हे गला, reduce हे गला haploid को, माने pair हे कि थिला unpair हे गला. सेथिबे आकु रिडक्शनल डिवीजन बोली कहिले. So we will understand how this diploid but what question asiba does a haploid cell undergoes meiosis? No, never. Haploid cell can undergo mitosis but haploid cell never undergoes meiosis. Make a point, make a note of these things. Haploid cell never undergoes meiosis but diploid cell always undergoes meiosis. Okay,
but not all diploid cell, few selected diploid cell ame padiva, few selected diploid cell undergoes meiosis, but haploid cell never undergoes meiosis. But mitosis, diploid cells undergoes mitosis, and there are few haploid cells which can undergoes mitosis. ये गोटे जिनस बुझा दरकार ये देख माइटोसिस वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस टू डिप्लॉयड सेल है किंतु मियोसिस रे कौन वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस फोर हाप्लॉयड सेल्स एटा नंबर कथा पड़ला किंतु एठी मु कौन कहली रिडक्शनल कहले आकु इक्वेशनल कहले काहे कि बिकॉज द पेयर्ड क्रोमोसोम हैव बिकम अनपेयर्ड एठी कौन पेयर्ड क्रोमोसोम हैव बिकम पेयर्ड ये पेयर्ड क्रोमोसोम ही रही गला किंतु ये पेयर्ड क्रोमोसोम अनपेयर्ड है गला से याकू इक्वेशनल कहले याकू रिडक्शनल कहले बट हियर द नंबर काउंट्स एठी मु नंबर टा देखैली माइटोसिस रे गोटे डिप्लॉयड सेल दीटा डिप्लॉयड सेल तयारी करिवो एंड मियोसिस रे गोटे डिप्लॉयड सेल चारिटा हाप्लॉयड सेल तयारी करिवो दिस इज द ओवरऑल थिंग ऑफ दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस all these things in details what is the cell cycle and what are the cell division phase and what is the preparative phase for another cell division that we will discuss in the diagrammatic form and binary fission prokaryote we might have discussed little bit in our previous chapter किंतु आगु को आमे सेकेंड ईयर रे डिटेल्स डिस्कशन करिवा या फिर गोटे सेपरेट चैप्टर अच्छी कि बाइनरी फिजन किमिति होची मल्टीपल फिजन किमिति होची किंतु मु कहली रिपीटेडली दैट कि बाइनरी फिजन इज नॉट एग्जैक्टली कॉल्ड ए सेल डिवीजन किंतु ये सेल डिवीजन टाइप रो किछि सिमिलरिटी रखुची बोली प्रोकार्योट रे सेल डिवीजन बाइनरी फिजन को कुहा जाय पारे there is a possibility that we can say that the cell division of prokaryote is actually binary fission but cell division word is most suitable to eukaryotes and in eukaryote cell division is of two types mitosis and meiosis and we had discussed overall of this part and we will go through the details of this total chapter in our next part. So now we will see, we understood the brief of this chapter. Now we will go through the points of the notes. Why cell division is required actually? Think if cell division doesn't found in living organisms, what will happen? There will be no growth. जो मैंने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अच्छंती तांको केस रे मु पर्टिकुलर करी कहूची कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इफ दे डजंट अंडरगोस सेल डिवीजन तांकर ग्रोथ हबनी ग्रोथ माने कोन सेल रो मल्टीप्लिकेशन हेई कि बॉडी रो साइज बढ़ुची बॉडी रो साइज एंड शेप इज एक्चुअली इंक्रीज्ड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ग्रोथ. So that growth is actually possible because of cell division. Repair damaged tissue. If there is some damage in our hand or some part in our body, जदि डैमेज हो से पाखे किछिरा सेल डेड हो गला से सेल नष्ट हो गला तो जेतल हमर रिकवर हो जाउची रिपेयर हो जाउची से डैमेज टा इट मीन्स व्हाट सेति की जगह रे cell division हला cell रो multiplication हला and then our damaged part become repaired. Then formation of sex cell for reproduction. Meiosis होची एठी हम जो reproduction विषय डिस्कशन करिले हमरा previous chapter रे reproduction is the process by which a living organism produce another living organism of same type. So for reproduction gametes are needed, mane haploid cells are needed. And how those cells are produced actually? From diploid cells. Undergoes meiosis, a cell division.
So if cell division doesn't occur, first कथा ही था देखो केते important mechanism living world रो, if cell division doesn't occur, there is no growth of living organisms at all, number one. There is no reproduction of living organism at all. माने reproduction भी ही न था। आज जो एते variety of living organisms repeatedly तांकर population growth करूचंती किंबा variety एते maintain ही के अच्छंती living world रे, that is because of cell division. And when a new living organism is getting birth, से तो जन्म होची, तार गोटे ग्रोथ होची, गोटे मैच्योरेशन होची, that is because of cell division. आमे पढ़िले in human the diploid is actually 46 number of chromosome. Total 46 number of chromosome ही रहे human रे, किंतु से 46 chromosome pair ही की रहे, 23 pair ही की रहे, दीडा pair ही की रहंती. This is number 1, this is number 2, and these two chromosomes are undergoes pairing. ताकू कहवा diploid. जेतेबेला अनपेयर ही जिवे haploid ही जिवो. सिमिति 23 pair of chromosome are actually found in human, and those 23 pair are actually 46 chromosome, and these are diploid. Out of 23 pair, 22 pairs are autosome and one pair is actually sex chromosome. माने कौन? आमे पढ़िले कि chromosome contain genetic material or gene or DNA, and this gene is actually responsible for the characteristic feature, माने living organism रो लक्षण को जी धारण करे. Different लक्षण पिले आमे मनीष आमर किछि गोटे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अछि बोली, किछि लक्षण अछि बोली. The same way every living organisms have their own characteristic features. Human is also having its own characteristic features. तो बॉडी रो जोड़ा कि नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर गुड़ाक जो जीन रे थिबो, आउ से जीन गुड़ाक जो क्रोमोसोम रे थिबो, ताकू आमे कहवा normal body chromosome or autosome or normal chromosome. These are the chromosome, this autosome or normal chromosome are the chromosome which contain the genes for normal body characteristics. Make a note. But sex chromosome or allosome are those chromosomes which is responsible to determine the sex or gender in a living organism. Animal case रे देखिबा, एनिमल केस रे कि प्लांट रे मध्य तो बाइसेक्सुअल प्लांट अच्छी ना, गोटे गोटे प्लांट बोथ सेक्स को कंटेन करती, तो से क्रोमोसोम दरकार. तो एनिमल तो यूनिसेक्सुअल रहती जनरली तो आइदर मेल एनिमल ना तो फीमेल एनिमल. सिमिति ह्यूमन केस रे एटा तो पूरा पर्टिकुलर अच्छी कि मेल ह्यूमन एंड फीमेल ह्यूमन आर यूनिसेक्सुअल नॉट बाइसेक्सुअल. So transgender is different thing. Transgender is not sexually active, so transgender is never called as bisexual. Okay, transgender जानिथिबो, transgender रो तांकरो ना मेल सेक्स पार्ट ना फीमेल सेक्स पार्ट कोडा भी एक्टिव नुह, रिप्रोडक्शन करिवारे इन माने अनेबल माने इनकेपेबल. ओके, सेथिपई दे आर नॉट कॉल्ड एज bisexual. So but plants are generally bisexual. Anyway, those are different topics. आमे हमरो main topic को आसीबा. The chromosome which contain, make a note, the chromosome which contain the sexual characteristic features of a living organism are called as sex chromosome. माने आमे पर्टिकुलर गोटे ह्यूमन डे जे कि मेल ह्यूमन, आउट ह्यूमन अच्छी से फीमेल ह्यूमन. देर इज अ मेजर डिफरेंस इज सी इज फीमेल, ही इज मेल. ओके, सो बिकॉज ऑफ सम पर्टिकुलर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फॉर दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स,
there are some gene responsible, and those genes are found in sex chromosome or allosome. Understood? I hope. Then come, what is cell division? We understand the process by which a parent cell divides to form two daughter cell is actually called as cell division. हमें देखिले one cell produces two cell produces another two cell, like this it is going on and on. Cell cycle, the sequence of events that occurs, we have studied this part, then all these things we had understood, but mitosis involved in asexual reproduction, माने generally जिमिति कि asexual reproduction माने जिमिति कि prokaryote रे binary fission हला ए सब जिनस गुडा generally asexual reproduction बोली ही कहा जाए, सेथिरे male gamete किंबा female gamete बोली किछि रहे नाही. But meiosis involved in sexual reproduction means what? Meiosis when meiosis occurs, a diploid cell will produce 4 haploid cell. आमे देखिले, आमे previously टिके चर्चा कले, discussion कले, and those 4 haploids are actually called as gametes. Okay, and these haploids are undergoing reproduction, sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषय आमर टिके टिके ब्रीफ आइडिया अच्छी प्रीवियस क्लासेस गुड़ा करे, किंतु डिटेल्स हमें पढ़िबा सेकेंड ईयर रे क्लास 12th रे. We will understand in details what is actually sexual reproduction happening in plant as well as human. पढ़िबा सेटे केमिति फर्टिलाइजेशन होची, केमिति हाप्लॉइड दीटा मिसी की डिप्लॉइड जाइगोट तयारी करचंती, आउ से डिप्लॉइड जाइगोटा केमिति मल्टीसेलुलर ही कि एम्ब्रियो ही कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होची, those things we will discuss in sexual reproduction in our next year. So एठी हमें एति बुझिबा दरकार कि sexual reproduction माने fusion of male and female gametes, आउ if male और female gamete तयारी होची, male and female gametes are produced by the process of meiosis from a diploid cell. बुझा पड़ला सेथि पई नेक्स्ट देन वी विल गो बाइनरी फ्यूजन विषय ओवरऑल आइडिया टिके नै जिबा. व्हाट इज एक्चुअली बाइनरी फ्यूजन कॉल्ड? स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल इनटू टू सेल. माने गोटे प्रोकार्योटिक सेल धरनिया बैक्टीरिया जते बेले सी भाग हे कि फ्यूजन माने भाग हेबा, ब्रेकडाउन हेबा, स्प्लिटिंग माने भाग हेबा, भाग हे कि सी दुईटा सेल तयारी करिवो, and those two cells are actually two bacteria, सेते बेले ताकू कहबा हम कोन बाइनरी फ्यूजन. Binary fission occurs in prokaryotes and or bacteria. Identical daughter cells are found, किंतु एइड किछि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आसीबनी. आइडेंटिकल डॉटर सेल माने सेम टाइप रो जेनेटिक जीन ही रहिबो, तार जस्ट डबलिंग हे जो कार्बन कॉपी माने जेरॉक्स कॉपी जिमिति हे जाय, गोटे जिंस रही दीटा कॉपी हे जाय, से टाइप रो हबो. गोटे बैक्टीरिया, वन बैक्टीरिया डिवाइड इनटू two different bacteria, one cell divide into two cell having same genetic composition, identical, से identical समान type रो रहिबो daughter cell, genetically similar to parent cells. बढ़िले आमे सेमानकर genetically similarity रहिबो parent cell सहित. parent cell आउ exist करिवनी, किंतु जदि देखिबा कि genetically सेमानकर differ करले कि नाही, किंतु आमे आमर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची, जो बापार मेल गेमेट मार फीमेल गेमेट फ्यूज होगी गोटे छुआटे जो जन्म होची, सेतोले कौन से छुआटा बापा सहित 100% सिमिलार रहूची ना माँ सहित 100% सिमिलार रहूची? नो, देयर इज अ डिसिमिलारिटी, लिटिल सिमिलारिटी एंड लिटिल डिसिमिलारिटी, माने 100% नॉट सिमिलार, 100% नॉट डिसिमिलार. सो सेते बेले से छुआटा को आमे आइडेंटिकल टू पेरेंट्स बोली कहिबा नाही. सो द थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, माने तांको छुआ को जतो जन्म करूचंदी, दोज ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, बट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंपोर्टेंट, मेक ए पॉइंट,
through sexual reproduction when parent produce offspring those are not identical माने similar न थाउचंती parents सहित okay but through asexual reproduction make a point through asexual reproduction when parent produce their offsprings those are similar in characteristics or genetically similar characteristics रे similarity रोची identical रोचंदी माने कौन genetically से माने identical okay because gene is actually deciding the characteristic feature of any living organism I hope you are understanding बुझी पारछ ना नहीं then three parts play major role in this division हमें पढ़िले टिके टिके कौन what is nucleoid we understood in chapter cell what is nucleoid there is no point to discuss again what is nucleoid the portion where the genetic material is found within the prokaryotic cytoplasm okay that is actually called as nucleoid the place where the genetic material of prokaryotes are found ribosome we understood what is ribosome 70s ribosome found in prokaryotes then plasmid this is the extra genomic dna okay genomic dna माने तो रहिला prokaryote रे extra genomic dna which is responsible for antibiotic resistance within a bacterial cell okay एटा पढिचे सब आमे if you remember आमे पढिचे सब जिंस जाको go to the chapter cell we have discussed तो ए तीनटा पार्टिकल एक्चुअली बाइनरी फिजन टाइम रे टिके इंपोर्टेंट रोल प्ले करूचंदी केमिदी कोन हमें सेकंड ईयर रे पढिबा डिस्कशन करिबा so this is not main topic of concern in this chapter एडा गोटे जस्ट गोटे फॉर्मल आइडिया देवा दरकार बोली कहली हमर मेन टॉपिक होची माइटोसिस और मियोसिस जोड़ा कि यूकैरियोटिक हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे होची सी लुक इनटू हियर एटा कोन हला ये हला पेरेंट सेल रे जते बेले सी तार जेनेटिक मटेरियल को डबल कर देला पर ये स्प्लिट हेगला भाग हेगला पर कोन दीटा डॉटर सेल तयारी करले एंड दीज डॉटर सेल्स आर एक्चुअली आइडेंटिकल टू दैट पेरेंट दिस इज एक्चुअली बाइनरी फिजन हैपनिंग हियर प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन कोन होची डीएनए डुप्लीकेशन होची हमें देखिले डीएनए डबल हला डबल हेगला डीएनए डुप्लीकेट माने डबलिंग हवा अमाउंट ऑफ डीएनए गेट सॉरी एटा टिके भूल अछि एटा सेट नहीं एटा को गेट लेख गेट डबल्ड डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड हला राइबोसोम एंड प्लाज्मिड एगुडा का मध्य डबल हेबे कारण ए सब सेल डिवीजन पई अंकर ओडे मेजर सॉरी बाइनरी फिजन रे अंकर ओडे रोल रहूची देन DNA attached to the cell wall migrate to opposite pole माने से माने opposite pole को जिबे opposite pole को गला परे से टोटल देखा इटे DNA टा थिला opposite pole को गला तापर ये split है गला cell टा the cell wall splits cell wall तापर भाग है गला two daughter cell formed see two daughter cell formed okay this is the easy process there is not much to discuss in this part then come to significance of binary fission कौन significance अच्छी कि एठे organism in a colony are genetically identical colony माने कौन गोटे बैक्टीरिया दीटा बैक्टीरिया तयारी करला through binary fission आउ थरे जो दीटा बैक्टीरिया हले से माने चारटा बैक्टीरिया तयारी करले through binary fission then चारटा बैक्टीरिया आउ थरे आठटा बैक्टीरिया तयारी करला through binary fission so all those bacteria are actually grouped together माने कोटे ग्रुपिंग हेकी रहले ताको हमें कॉलोनी वेली कहले कॉलोनी वेल तमे का कोच है जोडे की बहुत गुडा घर थाए ताको कॉलोनी वेली कहा जाए सो दिस बैक्टीरिया आर ऑलवेज स्टे और ऑलवेज लीडिंग देयर लाइफ ताको लाइफ टा किमिति स्पेंड करछन सबले कॉलोनी हेकी रहउचंदी मिसी की रहउचंदी एकुटिया रहू नाहंती okay so these colony are actually formed by means of this binary fission of bacterial cell and these are genetically identical setre ki genetic variation asiboni because these are simply the carbon copy of the parent cell rahi carbon copy he gala genetically similarity asibo sindi mitosis re mode genetical similarity asibo but meiosis is not like that
मियोसिस गोटे इंपोर्टेंट इवेंट से आम पढ़ा ये टी इंपोर्टेंट फैक्ट अच्छी माइटोसिस टी बुझाटा इजी रु मियोसिस गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट से मेन कॉन्सेप्ट कौन हो वी विल सी दैट वी विल डिस्कस come to cell cycle now. So cell cycle is happening in prokaryote? No, not at all. Prokaryote रो cell cycle बोली किछि नाही किंतु higher living organism जो मानकर माइटोसिस होची जो cell the cell which undergoes mitosis they are actually undergoing cell cycle. Okay, meiosis रो मध्य cell cycle एतेटा होउनी माने होउनी ही आदो किंतु मियोसिस सेल साइकिल रो ही गोटे पार्ट होची फॉर फ्यू टाइप ऑफ सेल नॉट ऑल टाइप ऑफ सेल बिकॉज ऑल टाइप ऑफ सेल आर नॉट अंडरगोइंग मियोसिस किंतु सेल साइकिल गोटे सेल जेतेबेले सेल साइकिल रे थिबो हां जेतेबेले से मियोसिस करिवो सेटा हमें पढिबा सेटा सेल साइकिल रो ही डिराइव होची आई विल टीच यू व्हेन आई विल टीच मियोसिस ओके बट सेल साइकिल रे सबुबेले कोन होची माइटोसिस ही होची when a cell undergoes cell cycle तो हम लाइफ साइकिल आम रोचे आम जन्म होचे बड़ होचे तापर मृत्यु होची मृत्यु होला पर आउ थरे आम माटी रे मिसी जाउचे आउ थरे हमर सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स गुडा आउ थरे जाईकी ह्यूमन बॉडी भितर जाउची फूड माध्यम रे जाउची प्लांट को जाउची प्लांट रो ह्यूमन बॉडी को आसुची प्लांट रो खाद्य गुडा खाइला ह्यूमन बॉडी को आसिला से ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल आउ थरे जाईकी से स्पर्म ओवम तयारी करची आउ थरे मनुष्य तयारी होची so the cyclic process होची ना नहीं life रो the life cycle will call it simply cell रो मध्य cyclic process होची one cell produces two cell then there is a gap there is a maturation of those two new cell then those two new cell undergoes again cell division to produce four new cell and those four new cell undergoes maturation तापर मैच्योर होला पर से माने आउथरे कंप्लीट मैच्योर हेगला पर आउथरे सेल डिवीजन हेबे तो एमिति गोटे देखिबो साइक्लिक वे रे सेल डिवीजन हेई थाउची दिस इज कॉल्ड ए सेल साइकिल हमें डिस्कशन करिले स्टार्टिंग रे तो देखिबा टिके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दा कोन होची सी साइकिल वेल तो जानचो किमिति साइकिल चका होलिया थाए सो एडा होची डिवीजन पेज एडे गोटे सेल one cell will produce two cell one cell will produce two cell in cell division or mitosis I am पढ़िले those two new cell will enter into this phase this is called as interphase कौन कहउछन याकू interphase कहउछन interphase रो कौन थाउची तीनटा पार्ट रहउची G1 phase S phase और G2 phase okay this is called as interphase actually cell cycle रो दीटा phase थाउची गोटे हला divisional phase और dividing phase जाको mitosis बोली कहउचे in this phase cell division occurs cell is getting doubled गोटे थिले दीटा हबो दीटा थिले चारटा हबो एमिति होची cell division okay then after the new cells are produced after cell division then those new cells undergoes maturation and those maturation phase is nothing but called as interphase ଆଉ interphase तीनटा पार्ट रे भाग होईची गोटे हला G1 phase that is called as gap 1 phase or first gap phase then S phase that is called as synthesis phase then G2 phase that is called as second gap phase or gap phase 2 whatever सो तापर आमर सेल डिवीजन रे एक्चुअली दीटा फेज रहउची गोटे न्यूक्लियर डिवीजन होची और देन सेल साइटोप्लाज्म रो डिवीजन होची माने टोटल सेल रो डिवीजन होची न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहिले एंड सेल रो डिवीजन और साइटोप्लाज्म रो डिवीजन और सेल मेम्ब्रेन दी भाग हे जिवा को साइटोकाइनेसिस कहिले साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस ए टोटल डा हला सेल डिवीजन रो ओवरऑल डायग्राम in our next class I will discuss in details of this cell cycle so I hope you understood whatever I have discussed in our next class we will understand details of this part thank you very much